Next one, question number 16. Which of the following electrodes will act as anodes when connected to a standard hydrogen electrode? This is very doable. Yeah, process oriented, logic oriented. Act as anode. Yani ki this guy is going to be the cathode. The SHE is going to be the cathode. So E naught, which has to be positive, will be 0 minus of the anode, right? That needs to be positive, which means ki, well, this needs to be negative. That's my logic, and that's it. Don't think about this. This is it. This is, nail on the head. We can cross check this ek bar, but the answer is either 1 and 2 or 3 and 4. Yeah, let's check which one. फिर से एक बार check कर लेते हैं. Act as anode मतलब कि वो हम लोग उसको here is where things get interesting. Yeah. Here is where things get interesting. अब देखो ये सब जल्दी में करने में चक्कर ये हो गया कि देखो ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं. दिस इज कंफ्यूजिंग, राइट? दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स and this one is a reduction potential. My God, please be careful on this one. You see that? Do you see that? बाप रे, पहले 3 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं और लास्ट वाला रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है. Yeah, because see, it's going from 0 to +3, 0 to +2, 0 to +2, and here it's going from 0 to -1. Oh God. Okay, so we got to do this from first principles. Okay. So as an anode, matlab, what is an anode? Anode is where oxidation happens, right? So now what we'll do is we'll do 0, which is SHE, because it doesn't matter if it's oxidation or reduction. Either way, SHE का 0 ही होता है, ठीक है? Plus the oxidation potential of any of these. अगर इसको और इसको add करें और ये positive हो जाए, then we are good. So now let's make them all oxidation potentials so that life is easy. तो इन तीनों का तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लास्ट वाला रिडक्शन है. लेट्स टर्न इट अराउंड, लेट्स मेक इट, ये रिडक्शन है, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर देते हैं, मतलब बिकम -2.87. नाउ इट लुक्स लाइक टू मी कि ओनली 3 इज गोइंग टू एक्ट एज द एनोड. वाओ, व्हाट डू यू थिंक? स्नीकी, राइट? 0 + 0.34. नाउ अकॉर्डिंग टू मी इज ओनली 3. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल या फिर ये थोड़ा अजीब लग रहा है? सोच के बताइए, ये ठीक लग रहा है कि नहीं? What do you think about this one? What about 4? Because see, the answer key gives me 1 and 2 as the answer, right? But this is the problem, right? Act as anode. Yeah? 1, 2 and 4. Dinesh saying 1, 2 and 4. और मैं बोल रहा हूं 3. इसका exact opposite मैं बोल रहा हूं. I think the problem with this question, let's do one thing, yeah, and we'll spend some time on this because, hey, this is a question from Exemplar, so we need to treat it seriously. So we'll assume that everything is correct and then we'll see अगर कुछ गड़बड़ है तो हम लोग फिर analyze करेंगे. But let's see what's happening here. यहाँ reduction potentials बहुत चीज़ों के दिए हुए हैं and look at this. Would you look at this? Would you look at this? नीचे देखिए what I'm highlighting with this blue thing over here because मेरा चेहरा यहाँ पे है नहीं तो you can't see how livid I am. Al3 plus 3 minus gives Al. यार ये तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, राइट? सो हाउ डेयर दे इन द एग्जाम्पलर उल्टा लिख दिया. तो डेटा गलत दिया है यार, डेटा गलत दिया है एग्जाम्पलर में. बट सी, दैट्स व्हाई आई सेड कि फ्रॉम आवर लॉजिक 3 शुड बी द आंसर, राइट? बट इफ यू सी वेरी केयरफुली, वो जो 0.34 जो नंबर दिया है वो भी उल्टा दिया है. यू सी, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट एज वेल. ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ऑफ CO2 + 2Cu. Oh my God. Yeah. So what we have been given is the reduction potential in all cases. Let's just see. Fluorine का भी वही है, reduction potential 2.87, right? कॉपर का हो चुका है. लेट्स चेक Fe to Fe2+. वो इस टेबल में शायद नहीं है, बट लेट्स जस्ट चेक एक बार. -0.44 है. ओके, इट इज देयर इन दिस टेबल. या गॉड. सो इफ यू गो जस्ट विद द नंबर्स एंड इग्नोर द फर्स्ट थिंग जो हमको करना पड़ेगा सैडली. या सो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन एट ऑल. इन फैक्ट दिस इज नॉट कूल. आई थिंक दिस नीड्स टू बी रिवाइज्ड. या
from the logic that we have been given, assume that you haven't mugged the numbers. From the logic we have been given 3 is the right answer. But what has actually been given is, let's remove all of this. इसको सबको मैं काट देता हूँ, right? Because that's what the NCERT is saying. All of these are reduction potentials. ठीक है? Don't worry about किस चीज का है, but they're all reduction potentials. Okay. Keeping the reduction potential idea in mind, जो हमारा पहला लॉजिक था, उसके हिसाब से only 1 and 2 are correct. Okay. If you are agnostic about the fact कि 1, 2 or 3 aluminum है कि Fe, I don't care. But all of these are reduction potentials that we have ascertained. हमने पक्का कर लिया कि reduction potential ही है, डेटा करके देख लिया है. अगर ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, देन ये वाला जो मेन लॉजिक था ना, मैं कलर बदल देता हूं ताकि क्लियर हो, येलो से लिखता हूं यहां पे. सी दिस लॉजिक इज व्हाट ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स. ठीक है, कौन सा लॉजिक? ये कि 0 माइनस एनोड मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब कि एनोड मस्ट बी नेगेटिव फॉर दिस टू वर्क. हेंस द आंसर इज 1 and 2. आई एम स्पेंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज फॉर सम रीजन एग्जाम्पलर ने थोड़ी गड़बड़ की है डेटा देने में. ठीक है, कूल, इट्स ओके तानिश, मैंने इसको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है. दिनेश, कार्तिक, आई अंडरस्टैंड आपका कंफ्यूजन कहां से आया, बट दैट्स ओके. दिस वाज नॉट अ गुड क्वेश्चन, बट स्टिल वी हैव एनालाइज्ड इट एंड वी हैव डिफीटेड द क्वेश्चन बाय कंप्लीटली ध्यान से देख के, एनसीईआरटी से देख के क्या किया है. ओके, विद दैट टाइप 2 क्वेश्चंस आर डन.